बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात करेंगे एस्पिरिन की इंडिकेशंस की, जो कि इन्होंने हाइपरटेंशन की नाइस गाइडलाइन में बताई। तो उसके लिए वी हैव अ निमोनिक. First one is the high risk factors and the second one are the moderate. So if high risk factor, even if one of them is present, then you have to prescribe aspirin. Guideline says that 75 to 150 mg per day from 12 weeks onwards. Okay, and if there are moderate factors, then 2 of them must be present. If 2 or more are there, then you have to prescribe. Okay, so we have made a mnemonic. The mnemonic is C CHAD. Okay, this is the mnemonic for high risk, and for low risk the mnemonic is NNFFTTT. Okay, NNFFTTT. So this is something that we have to remember. Okay, so what is C CHAD? This is the high risk category. So even if one of these is present, you have to prescribe aspirin. Okay, so from C we have chronic hypertension, we have CKD, we have hypertension in previous pregnancy. From A we have autoimmune disease, anything, mostly we have SLE or whatever. And then from D we have type 1 or 2 diabetes. Okay, GDM itself is not an indication for aspirin. If the patient is already a known case of type 1 or type 2 diabetes, or whether she has been recently diagnosed, then this is an indication for aspirin. So if you're sitting for booking and a patient comes to you and she says that she is a known type 2 diabetic, then in that case you don't have to wait for other risk factors, you just have to start aspirin. Okay, or the patient comes to you and tells that she's a chronic hypertensive, start aspirin. Or she comes to you, she says that right now I have no issue, but in my previous pregnancy I had PIH. Okay, then this is an indication, and this is often ignored. Okay, PIH in last pregnancy, GDM in last, these are ignored, but GDM in last pregnancy is insignificant in this aspect, but PIH in last pregnancy is an individual risk factor for starting aspirin. You don't need to dig out anything else, just start aspirin with this one factor. Okay, so these are the high risk factors. Now we're going to talk about the moderate risk factors. Okay, so for the moderate risk factors, the mnemonic is NN whatever that was. Okay, so basically for the moderate risk factor, 2 must be present. So we have nulliparity, age 40 or above. Okay, the age 35 or above is for thromboprophylaxis scoring. For this aspirin criteria we have 40 or above. Then we have family history of eclampsia. Yes, if the patient's mother or sister or some, of course अब मर्द को तो eclampsia होने से रहा. Okay, so family history of eclampsia from the second F. Then with these T's we have 10-year interval, more than 10 year, which is so short interpregnancy interval is also an issue, but for aspirin long interpregnancy interval is the issue. Okay, so it's about the long, more than 10 years. Okay, तो आपने पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्शन की काउंसलिंग करनी है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी कि वो एस्पिरिन का कैंडिडेट बन जाए. मतलब ये भी नहीं करना कि 10 साल, इतना नहीं होना चाहिए, इतना लॉन्ग इंटरप्रेगनेंसी इंटरवल नहीं होना चाहिए. ओके, एंड देन वी हैव ट्विन जेस्टेशन. ठीक है, then we have BMI of 35 or more. So for age we have more than 40, for BMI we have 35 or above. So if any 2 of these things is present, then we are going to start aspirin. Okay, nulliparity, age 40 or above, family history of eclampsia, and long interpregnancy interval of more than 10 years, twin pregnancy, and 35, this T is for 35 or more का BMI. So let's just do the scenarios now. अगर आपके पास एक पेशेंट आती है, कोई उसने वो कंसीव्ड ऑन ट्रीटमेंट नहीं है, शी इज़ मैरिड फॉर 8 months एंड शी इज़ प्राइमी एंड शी इज़ ट्विन, विल यू प्रिस्क्राइब एस्पिरिन? Yes.
ओके यस, बिकॉज शी इज़ फुलफिलिंग द क्राइटेरिया ऑफ मॉडरेट. मॉडरेट में दो चीज़ें हों, नली पैरिटी तो प्राइमी तो ये है, और ट्विन. तो हर प्राइमी ट्विन को असूलन आपने एस्पिरिन स्टार्ट करानी ही करानी है 12 वीक्स पे. हाँ, लो. ठीक है. नाउ इफ़ अ पेशेंट कम्स टू यू, शी इज़ प्राइमी एंड शी इज़ मोर देन 40, विल यू स्टार्ट एस्पिरिन? प्राइमी का तो 1 पॉइंट हो गया, 40 से ज़्यादा पे भी है तो ऑल्सो येस. दो मॉडरेट इधर भी आ गए. नाउ अ पेशेंट कम्स टू यू, she is para 2 SVDs and right now she is telling you that she is chronic hypertensive. Will you start aspirin? Yes, because अब ये chronic high है, high risk. तो ये एक चीज़ है, तो एक भी चीज़ है, तो ये बाकी प्राइमी होना मॉडरेट है, तो प्राइमी के साथ फिर आपको और चीज़ भी चाहिए होगी. अगर प्राइमी है मोर देन 40 है, अगर प्राइमी है ट्विन है, अगर प्राइमी है उसका BMI बहुत मोटी है, ऐसे फैट शेम नहीं करना चाहिए कभी भी पेशेंट को, लेकिन याद करने के लिए मैं कह रही हूँ, अगर वो मोटी है 35 या ऊपर है उससे ज़्यादा, तो भी आप स्टार्ट कराएंगे. अच्छा, अब अगर एक पेशेंट आती है वो पैरा 2 है, इसकी लास्ट चाइल्ड बर्थ है 11 ईयर्स बैक, तो भी आप स्टार्ट कराएंगे? नहीं, आप तब नहीं स्टार्ट कराएंगे, क्योंकि एज अगर लेट्स से उसकी सिर्फ लास्ट चाइल्ड, सिर्फ लॉन्ग इंटू प्रेगनेंसी इंटरवल एक मॉडरेट है, तो उसके साथ कोई और भी मॉडरेट होगा, 2 होंगे, तो फिर आप स्टार्ट कराएंगे. तो अगर लास्ट चाइल्ड बर्थ 10 ईयर्स बैक के अलावा लेट्स से अगर वो मोर देन 40 ईयर्स ओल्ड है, तब आप कराएंगे. अगर वो 30 ईयर्स की है, मतलब बहुत जल्दी उसकी 30 ईयर्स की और लास्ट चाइल्ड बर्थ 10 ईयर्स बैक है, तो इस केस में आप एस्पिरिन नहीं स्टार्ट कराएंगे. ठीक है. फिर आपको कोई और मॉडरेट चाहिए, मतलब आपको 2 मॉडरेट फैक्टर चाहिए एस्पिरिन के लिए, लेकिन एक हाई रिस्क वाला फैक्टर चाहिए एस्पिरिन के. ठीक हो गया. तो इसीलिए ये अच्छा, एक पेशेंट आपके पास आई है, वो टाइप 2 डायबिटिक है और वो है पैरा 1, तो आप उसको एस्पिरिन स्टार्ट कराएंगे? येस, बिकॉज टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ ऑल्सो अ हाई रिस्क फैक्टर. तो आपने हाई रिस्क फैक्टर्स याद करें. जो निमोनिक है C-CHAD और ये NNFFTTT. ठीक है. NNFFTTT जो है ये है मॉडरेट का निमोनिक, और C-CHAD जो है वो हाई. अगर एक भी होगा तो आपने एस्पिरिन स्टार्ट करानी है, और मॉडरेट अगर 2 होंगे तो आप एस्पिरिन स्टार्ट कराएंगे. Thank you guys. Happy prescribing aspirin. This video is not sponsored by Aspirin.